Hello everyone. So this is our first lecture on introductory microeconomics in which we will be covering up to basic economic problems. But before we move into this topic, we need to understand some of the basic terms that we will be encountering in economics again and again. So let us understand these terms and then we will move towards our topic. So kindly write this down, basic terms. So the first term that we need to understand is resource. Resource basically refers to goods and services which are used for production of other goods and services. बेसिकली वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जिसके थ्रू हम और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके उन्हें हम रिसोर्स बोलते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल है लैंड. लैंड के थ्रू हम क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेबर के थ्रू हम लोग सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे टीचर जो है, टीचर एक लेबर का रूप लेकर टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. देन हमारे पास टूल्स एंड मशीनरी आ जाती है. ठीक है, मशीनरी के थ्रू लेट्स से कि हमारे पास हम मशीन्स का यूज करके क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं. सो काइंडली राइट दिस डाउन. Goods and services used for production of other goods and services. इसका हमारे पास एग्जाम्पल दैट इज लैंड, लेबर, etc. There are another two terms which you will encounter again and again in economics, which is goods and another term is services. So you need to understand the basic difference between goods and services. So when we are talking about goods, it basically refers to tangible physical objects. Basically, all those items or objects which can be felt, which can be seen, those are known as goods. Basically, उन सारी items या वो सारी objects जिनकी कोई physical appearance हो, उन्हें हम कहते हैं goods. जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फूड आइटम्स हो गया, क्लोथिंग हो गई. ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास गुड्स हैं. और सर्विसेज क्या होंगी? सर्विसेज वो सारी इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट्स को, सर्विसेज रेफर टू इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट्स. वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम देख नहीं सकते, दे कैन ओनली बी फेल्ट. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है टीचर है, वो टीचर क्या करेगी? एक टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी. इससे हमारी कुछ नीड्स तो सेटिस्फाई हो रही हैं बट हम इन्हें देख नहीं सकते. ठीक है, सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स. सबसे पहली क्या है? दैट इज नीड. जब हम नीड की बात करते हैं ना, नीड बेसिकली हमारे पास वो आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर आवर वेलबींग और आवर सर्वाइवल. बेसिकली वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारी आइटम्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम कहते हैं दैट दीज आइटम्स आर नीडेड बाय इंडिविजुअल्स. राइट, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फूड, कि फूड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आइटम्स that are essential for our well-being and survival. Another term is want. Want बेसिकली उन सारे आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनसे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एनहांस. का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मूवीज का. ठीक है, मूवी क्या है? मूवी में अवॉइड कर सकती हूँ. मूवी आई डू नॉट नीड टू वॉच अ मूवी फॉर सर्वाइवल. मूवी मेरी सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है.
बट मैं उसे सिर्फ वॉच कर रही हूँ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। सो वो सारे आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स जो हम खरीदते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं दैट दीज आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स आर वांटेड बाय अस, राइट? सो आइटम्स that enhance the quality of life. Example, luxury items, entertainment, etc. And the third term that we need to understand under this is desire. So there is a basic difference between want and desire, which is affordability. कुछ चीजें हैं जो हम खरीदना चाहते हैं बट हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उन्हें परचेज कर सके। जैसे कि एग्जांपल है, लेट्स से कि मैं मर्सिडीज है, मैं मर्सिडीज को परचेज करना चाहती हूँ बट मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे अफोर्ड कर सकूं, राइट? सो दैट आइटम बिकम्स अ डिजायरेबल आइटम। ठीक है, ठीक है। सो जिन आइटम्स को हम खरीद सकते हैं और जो सर्वाइवल के लिए नहीं, सिंपली क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए हो, उन्हें हम वांट कहते हैं। और जिनको हम खरीद नहीं सकते बट हम डिजायर करते हैं, उन्हें खरीदना चाहते हैं बट खरीद नहीं सकते, उन्हें हम डिजायरेबल आइटम्स कहते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन want and desire is affordability. There are items which we desire but won't be able to fund their purchase, right? So these were the three terms which are very important in economics. And last term that we need to understand today is scarcity. This is a very important term. Scarcity, S for scarcity, and its meaning is shortage basically. So जब हम स्कारसिटी की बात करते हैं ना, स्कारसिटी का मतलब शॉर्टेज। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से कि किसी इंडिविजुअल ने 5 kgs ऑफ कॉर्न का डिमांड किया, ठीक है, बट जो फार्मर था वो सिर्फ 2 kg ऑफ कॉर्न ही प्रोड्यूस कर पाया, तो एक तरह से कॉर्न की शॉर्टेज हो गई। तो हम उसे कहेंगे कि कॉर्न हमारे पास स्कार्स है, ठीक है। सो शॉर्टेज बेसिकली रेफर्स टू स्कार्सिटी। आर द टर्म्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड while studying economics. Right, now let us move towards our topic, which is basic economic problems. So now let us understand the two basic economic problems. So for that, first write down this point and then I'll explain it to you. Kindly write. Each individual uses their resources to fulfill one's needs. I hope after understanding the term resources, needs, you are able to understand this statement to some point, to a certain limit, right? So इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का ये मतलब है कि बेसिकली हर एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बाकी के गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे लैंड हो गए, लेबर हो गया, ठीक है। सो हर एक इंडिविजुअल कहते हैं कि इन रिसोर्सेज का यूज करता है
अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं मशीनरी, किसी इंडिविजुअल ने मशीनरी यूज, तो उस मशीनरी से उसने शर्ट्स की प्रोडक्शन की, एंड शर्ट की प्रोडक्शन से उसने जो अपनी क्लोथिंग पर्पसेस जो थी, जो उसकी एक नीड थी, वो उसने फुलफिल की. So that can be an example. Another example that we can take here is कि let's say कि एक फैमिली है, ठीक है, उनके पास फार्म है, फार्म में जो लैंड है वो क्या होगी, हमारे पास रिसोर्स हो गई, राइट. सो उस रिसोर्स के थ्रू उसने कॉर्न की प्रोडक्शन की. हो सकता है कि हाफ ऑफ द प्रोडक्शन जो भी है कॉर्न की, दैट कैन बी केप्ट विद देमसेल्व्स फॉर फैमिली पर्पसेस, ठीक है, फैमिली कंजम्पशन के लिए, एंड बाकी की जो कौन है वो मार्केट में जाके उसकी सेल कर सकता है, और उससे जो भी वो कमाई करेगा उसके थ्रू वो बाकी के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है. तो एक तरह से यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि उसके पास एक ही रिसोर्स था विच इज लैंड, और उसी लैंड के थ्रू ही उसने डिफरेंट डिफरेंट अपनी नीड्स जो थी उन्हें फुलफिल कर लिया. दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. You can write down one of these examples. So, for example, the family farm can produce corn, use part of it for consumption purposes, and obtain housing, clothing, and other services in exchange for the rest of the produce. So, अब हमारे पास आते हैं कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ह्यूमन की वांट्स है ना, हमारे ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है, बट हमारे पास जो ये रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है. ह्यूमन की इच्छाएं क्या है, ह्यूमन चाहता है कि वो कार भी खरीद ले, वो रेफ्रिजरेटर भी खरीद ले, वो एसी भी खरीद ले, वो एक बड़ा मकान भी बना ले, वो घूम भी ले. तो ह्यूमन की जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, बट ह्यूमन के पास जो रिसोर्सेज है, उसके पास जो लैंड है, उसके पास जो लेबर है, उसके पास जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, कैपिटल है, वो सब उसके पास बहुत ही लिमिटेड है, एंड दैट इज वेयर दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज. ठीक है, सो काइंडली राइट दिस डाउन. हाउएवर, human wants are unlimited and resources are limited. जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम और ले सकते हैं, है उनके पास एक फार्म है, ठीक है. सो इस फार्म के ऊपर प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए टूल्स, रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, और वो रिसोर्सेज जो है प्रोडक्शन के लिए वो उनके पास लिमिटेड है, राइट. सो रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस आर लिमिटेड. तो इसके कारण क्या होगा कि जो वो प्रोडक्शन करेंगे वो भी लिमिटेड हो जाएगी, राइट. एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर उनके पास लैंड ही 2 एकड़ की है तो उससे ज्यादा वो प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, राइट. सो प्रोडक्शन इज लिमिटेड.
जिसके कारण अब ये जो प्रोड्यूस है, जो लिमिटेड प्रोडक्शन है, उसे जब वो मार्केट में सेल करेंगे तो उससे जो अर्निंग्स आएंगी वो भी लिमिटेड आएंगी, जिसके कारण जो वो अदर गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज कर सकते हैं वो लिमिट हो जाते हैं. सो गुड्स एंड सर्विसेज which can be bought are limited. And now the most important thing here is कि इसके कारण, क्योंकि हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो ह्यूमंस है दे हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे वांट. एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है. उस 10 रुपीज से मेरी दो वांट्स थी. एक पहली वांट थी कि मैं कोई मेडिकल चेकअप करवा लूं, दूसरी वांट थी कि मैं अपने लिए चॉकलेट परचेज कर सकती हूँ. सो क्योंकि मेरे पास वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, दो वांट्स हैं, ठीक है, बट मेरे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, मेरे पास जो 10 रुपीज है वो लिमिटेड है. दैट इज वाई आई विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन दैट मेडिकल चेकअप एंड दैट चॉकलेट. और मैं वो चॉइस कैसे बनाऊंगी कि उन दोनों में से जो सबसे एसेंशियल है, उन दोनों में से जो सबसे बेटर है मेरे लिए, आई विल चूज दैट. Right? So that is the problem that arises here कि human wants unlimited है और resources जो हैं they are limited. So as we can also see in this example, क्योंकि goods and services जो वो buy कर सकते हैं वो limited है. So family is forced to make a choice between different goods and services that they, ठीक है. So our first basic economic problem can be concluded in this way. Therefore, everyone faces scarcity of resources and thus has to use the limited resources in the best way possible to fulfill their needs. ठीक है. So what we can conclude from our first basic economic problem is that कि हर एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज की शॉर्टेज फेस करता है. रिसोर्सेज हर एक इंडिविजुअल के लिए लिमिटेड है एंड इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे पॉसिबल में यूज करे अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए. मतलब कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए ताकि उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके. ठीक है. सो आई होप दिस फर्स्ट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. राइट दिस डाउन. There has to be compatibility between what people in society collectively want
and what they produce. सो दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो सोसाइटी में कलेक्टिवली जो लोग डिमांड करते हैं एंड सोसाइटी जो कलेक्टिवली प्रोड्यूस करती है उनमें कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है. हमारे पास ये compatibility between what people in society want and what they produce. Why is this important? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं. ठीक है, तो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो इसलिए ये कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेट्स से कि मेरे पास एक फैमिली है. ठीक है, उस फैमिली ने 12 केजीज ऑफ कॉर्न जो है वो डिमांड किया, बट जो फार्मर्स हैं उन्होंने 15 केजीज ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस कर दिया. तो इससे क्या हुआ कि 3 kg ऑफ कॉर्न जो है वो तो मेरा वेस्ट गया क्योंकि फैमिली ने तो इतना डिमांड ही नहीं किया. तो जब वो कॉर्न के साथ कॉर्न की वेस्टेज भी हुई बट उसके साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज जो थे वो भी वेस्ट हो गए. राइट. सो इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच में कंपैटिबिलिटी हो ताकि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो. ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन दिस एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, if people in society do not want as much corn as the farming units are capable of producing collectively, a part of resources of these units can be used for production of some other goods and services which is क्या है कि फार्मर्स इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट 3 kg ऑफ कॉर्न जो कि हमारे वेस्ट जाएंगे एज वेल एज जो रिसोर्सेज उसके कारण वेस्ट जाएंगे, वो रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं फार्मर्स, वो किसी और गुड एंड सर्विस की प्रोडक्शन में उन्हें यूज कर सकते हैं. ठीक है, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है. सो दिस इज आवर सेकेंड इकोनॉमिक problem. We can again conclude this second economic problem through this point. Therefore, the scarce resources of society have to be allocated properly in production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of
people of society. और हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के, उन्हें हमें एलोकेट करना होगा प्रॉपरली फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें बहुत ही संभल कर, बहुत ही अच्छे से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में यूज करना होगा, ठीक है, इन कीपिंग विद द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी। एंड हमें इंश्योर करना होगा, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो हमारे वेस्ट ना हो, ठीक है, इसीलिए। So that is our second economic problem. Basic economic problems can be concluded in this manner. Two basic economic problems faced by the society First problem is allocation of limited resources. As we have seen कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एलोकेट किया जाए। एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में की प्रोडक्शन में एलोकेट किया जाए। So these are the two basic economic problems which are faced by the society, and I hope this lecture was helpful and clear to all of you. Thank you so much.